Hello everybody, namaste and a very very warm welcome. How are you doing? कैसे हैं आप लोग? Quickly type it in the chat box. We are today at day 5. आज हम अपने final day पे हैं and we'll be learning something really interesting today. I am looking forward to the session. I hope you are too. I also went on Facebook community yesterday and I saw कि आप लोगों ने इतने loving posts डाले. So thank you so much. Keep practicing, keep sharing your experience with us. I'm also good. Thank you so much. Not good. What's up? क्या हो गया आपको? I hope you all got the chance to practice today's session. आज का yoga session was also very good and super relaxing. It was for me. How was it for you? Amazing. Let us start with some questions. थोड़े questions के साथ start करते हैं. So for the same, let me please invite our expert. Namaste, sir. Warm welcome. Hi, namaste. How are you, sir? I'm doing pretty good. How are you? Very good, sir. Very good. We are back with some questions for you. Let's play KBC. Yes. So the first question is for hunchback. Any exercises for hunchback for age 19 years female? Okay. So one exercise जो मैंने आपको कहा था, you can just keep your hand like this or cross it like this. Chair में पीछे बैठिए and पूरा दोनों elbow को ऊपर ले जाइए. So this is one thing you can do. You can progress it. I'll just turn the angle and show you. Sit on the edge of the chair. Keep your hands on the shoulder. Lean forward and take both your elbows up. You'll feel a stretch on the thoracic spine. So these are the two things that you can do. Apart from this, you can stand, keep your hand on a surface and bend forward. So as you can see, I'm stretching my back muscle. So these three things, apart from this, strengthen your back, stretch out your abdominal muscles, do everything that is in the posterior direction, and your hunch should improve. Last but not the least, if suppose you're sitting like this throughout the day, आपका hunch correct नहीं होगा. You have to sit straight. That's it. Amazing. Thank you so much. So the next question is for tennis elbow. Please let us know the exercises for tennis elbow. So I am covering tennis elbow in today's section. So I'll talk about it in that. All right, sir. I have weak neck back issue. No pain, but burning sensation sometimes. And right leg nerve is stiff or feeling of stretch up to my big toe. Can I go on my toes and heels? And also, can I walk backwards to strengthen my legs? See, as you said, ki it's weak. So you have a solution that you need to strengthen it. When I talk about your necks, you remember the isometric जो हमने किया था कल, all directions. You start with this, start with your shrugs, do some shoulder exercises that I'll teach you today. When I talk about your lower back, we did the bridging, we did single leg knee to chest, we did the straight leg up and down, we went on the side and we did the clamshell. So you can do this for your lower back and glutes. Now, when you talk about the tightness that you feel in the leg, again, as I mentioned, any type of sensation traveling down, it's more probably something related to your nerve. So for that, maybe get an investigation, show it to a doctor, let him figure out, is it a spondylitis, is it a nerve compression, is it something related to some other underlying medical history or a medical issue, and then get that solution done. So yeah, this is the way you should move ahead. All right, sir. So we'll take one more question and then we'll start today's session and then pick up remaining ones after this. Can we ask Dr. Kevin about the do's and don'ts in hip bursitis? Bursitis. So bursitis is basically, so we have pouches in every joint that does the lubrication of the joint. And whenever there's a pressure on that joint, whether it's hip, shoulder, any part of your body, it will get inflamed.
and that is called as bursitis. So do's and don'ts are, don't move your joint to the extreme range. जहाँ पे आपको लगता है कि मुझे ये करने से पेन हो रहा है, या when I'm folding my legs, I'm sitting on the floor, I get a pinch on my hip joint. Avoid those things. Things that are pain free, you can do it absolutely without any discomfort. You can do everything that you are able to do. So simple. जो चीज में तकलीफ है, avoid doing that. The things that you are comfortable, zero pain, zero problem, zero stiffness, you can do it. Keep icing. Ice the area where you have pain. That will help you with the bursitis. Yes. Amazing. Thank you so much. A very warm welcome to everybody who are finally here at the fifth day of this workshop. Today we'll be talking a little bit about the shoulders, and Sir also covered a little bit of elbows and wrist maybe. So let's looking forward to what we learn in the session today. And Sir, all yours, warm welcome again. Thank you. Namaste, guys. I hope the last 4 days were informative. You could take some tips out of it. You could understand some exercise. I know I cannot explain every condition in 1 hour, and I try my best to take the most common issues and just point out the things that you can do. Again, being a doctor, I will still say, show it to a doctor, let him figure out, let him understand the diagnosis, and then go about with the exercise. Few exercises, 100% you can do. But when we talk about specific, like I have cervical issue and I have pain in the hand or tingling, burning in the hand or burning in the feet, let the doctor decide why is it happening. You have a diagnosis, you get a treatment. It is very simple. If you try things that is trial and error, there might be chances ki you might recover. There might be some chance ki you might, deteriorate even more. The problem might aggravate. So just be thoda sa careful. So today I'm going to talk about the shoulder joint. One of, again, the most complicated joint of our body. एक शोल्डर हिलाने को आपको इतने सारे स्ट्रक्चर्स, इतने सारे जॉइंट्स, इतने सारे मसल्स, लिगामेंट्स, टेंडन, एवरीथिंग हैव टू वर्क जस्ट एक हाथ हिलाने को. चाहे मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, चाहे मैं बाल खुजा रहा हूँ, चाहे मैं बटन लगा रहा हूँ, चाहे मैं पानी पी रहा हूँ, everything requires multiple thing in the shoulder. And thus, I personally feel our shoulder is the most complicated joint. So we'll just start with the presentation. So when I talk about the shoulder joint, like this is my right shoulder. So it looks like this. This is my arm. This is my collarbone. This is the scapula. जो मेरे को पीछे यहाँ feel होता है, a triangle shaped bone. That's the scapula. So this is the joint. Next slide. Yes. This arm is called humerus. This is called glenoid fossa, where we have the glenohumeral joint. This is called clavicle, and this is called scapula. Next. So when I talk about the shoulder joint, it's a ball and socket joint. You can move it as you want. आप उसको आगे पीछे, अंदर बाहर, you can rotate it, you can take it back, you can take it out, you can take it in. So it's a ball and socket joint. You can move it in every direction. And because it's a ball and socket joint, it is a very delicate joint. हम गलत सो गए, पेन आ गया. कुछ गलत उठा लिए, पेन आ गया. गिर गए शोल्डर पे, तकलीफ हो गई. डायबिटीज हो गया, फ्रोजन शोल्डर हो गया. So there are multiple things that are correlated with your shoulder joint. And just to protect that joint, again, बहुत सारे structures है. And जब मैं, when I say बहुत सारे structures, I'll just show you in the next slide. So rather than calling it a shoulder joint, नहीं, आगे, अपन पीछे गए. So rather than calling it a shoulder joint, next, I'll prefer calling it a shoulder. Next slide. Complex. So why is it a shoulder complex? There are multiple things happening. So when I talk about multiple things, for example, when I'm lifting my hand up, the scapula, this bone, ये जो bone है shoulder के पीछे,
this moves with your arm. So when I'm taking my hand up, this bone is also moving out. When I'm bringing it down, this bone is moving down. So this is called as scapulohumeral joint. Rhythm, sorry, scapulohumeral rhythm. अगर ये rhythm में कुछ भी problem हो, तो क्या होगा? If suppose this bone is moving too fast or this bone is moving too slow, there will be a pinch in the shoulder. And your complaint will typically be, जब मैं हाथ उठाता हूँ, it hurts. I can lift it up, but there is lot of pain. I have some swelling. I cannot lift anything. I cannot take my hand behind. I cannot take my hand behind my back. These conditions will become painful, like certain activities, like, brushing, toothbrush, picking or reaching for something, keeping something up on the showcase. So everything will become painful. That happens when your scapulohumeral rhythm is altered. Next slide. And okay. So what all movements do we have? Or okay, we'll just forget the slide for now. So we have your scapulohumeral rhythm. Second, we have a glenohumeral joint. As I told you, the socket of the glenoid is very small and the head of the humerus, the arm bone, is very big. So ये mismatch हो गया है. अब ये mismatch है इसलिए shoulder में तकलीफ ज़्यादा है. So we have something called as a labrum जो उसको थोड़ा सा width या depth देता है, that can hold the head in place, and we have multiple structures that keeps the head in position. And you know what? The muscles that come out from the scapula, that gives the shoulder a stability. It will try to protect the shoulder. उसका major role यही है. And whenever I'm moving my hand, ये उसको support करेगा कि ठीक है आप move करो, मैं आपको support कर रहा हूँ. That is the role of the muscle. Again, why complex? So we have scapulohumeral rhythm, we have glenohumeral joint, we have acromioclavicular joint. So ये जो मेरा पीछे का हड्डी है यहाँ एंड जो मेरा कॉलर बोन है ये दोनों भी जॉइंट बनाता है. So if you can see this bone over here, like ये जो कॉलर बोन है एंड acromioclavicular joint. So ये भी है जो ये शोल्डर कॉम्प्लेक्स को सपोर्ट करता है. एंड लास्ट जो मेरा क्लैविकल है, अब ये एक साइड तो जॉइंट हो गया, दूसरा साइड खुला है. सो ये दूसरा साइड क्या कर रहा है, मेरे स्टर्नम को जुड़ा हुआ है. सो यहां से जॉइंट है, यहां पे जॉइंट है, यहां पे जॉइंट है, 3 जॉइंट्स एंड अ स्कैपुलोह्यूमरल रिदम. ये 4 चीज आपके शोल्डर को मूव कर रहा है, नहीं कर रहा है, तकलीफ हो रही है, नहीं हो रही है, ये सब डिसाइड करता है. इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. And basic, we all know what all movements do we have in a shoulder. We can take it up, flexion. We can take it back, extension. We can take it up, abduction. Bring it in, adduction. You can rotate it towards your stomach, so internal rotation. You can rotate it outwards, external rotation, and circumduction, circles. So these are the movements available in your shoulder. Next. And how a faulty posture can, like I've been talking a lot on posture, कि आपका बैक सही रखो, आपका thoracic spine सही रखो, forward head मत रखो, protracted shoulder मत रखो, your knee should be proper, your foot should be proper. So, okay, now we all are sitting over here. I want every one of you guys, take your hand up and bring it down. We'll repeat it. Take your hand up and bring it down. Easy, simple, कोई problem नहीं है. Now, just do this. If somebody's shoulder is आगे, so bring your shoulder at the front. Now take your hand up. See, my hand is not going up. And if I'm going up, I have to push it up. Just because my shoulder is आगे. That is what happens with your faulty posture. And if you take your shoulder back and you lift it up, you see बहुत आसानी से you can lift it up. So that is the alignment of your joint. If I misalign the joint and I say कि अरे
ये तो बचपन से ही ऐसा था, अभी आई एम 70 years old, अब मैं क्या सुधारूंगी अपना पोस्चर, तो प्रॉब्लम होना ही है. That is why you have to be careful, you have to respect your body, you have to correct the alignment so that your joints are free. You can move in all direction, your muscles are not stressed, your ligaments are telling you thank you कि मुझ पे टेंशन नहीं आ रहा है, and everything is going on superb. Next slide. And it is the most ignored joint or a muscle. Now honestly tell me one thing, आपने कितने सारे लोगों को देखा है कि एब्स अच्छे हैं, चेस्ट मसल अच्छा है, बाइसेप्स अच्छे हैं, पैर के मसल्स अच्छे हैं, बैक मसल स्ट्रांग है, लेकिन मुझे बताइए कितने लोग ये पार्ट पे काम करते हैं, ये पार्ट पे. आई बेट यहाँ पे 90% लोगों को ये पार्ट की एक्सरसाइज भी नहीं पता है. अरे वो हड्डी बाहर आती है, अरे विंगिंग ऑफ स्कैपुला है, अरे वो तो वैसी ही है, उसका कितना भी करो ठीक ही नहीं होता. बिग प्रॉब्लम, क्योंकि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मसल जो आपके शोल्डर को स्टेबिलिटी देता है. इवन फॉर द पर्सन हु गोज टू द जिम एंड ही इज लिफ्टिंग हैवी, if he's not training his rotator cuff, his serratus anterior muscle, his shoulder is always weak and prone to an injury. So on this bone पीछे से there are three muscles: supraspinatus, teres major and teres minor, and infraspinatus. And आगे it is subscapularis. So these four muscles are called your rotator cuff. Take this name, rotator cuff. Very important muscle to protect your shoulder joint. And the second important group of muscle is your serratus anterior. हम जब हाथ उठाते हैं, ये जो बोन है ये फील होता है हमको यहाँ पे, एवरीवन कैन फील इट. अब यहाँ पे आपको ऐसा रिप समान ना मसल दिखेगा, दैट इज शोन इन द इमेज. दिस इज अ serratus anterior muscle जो अपना स्कैपुलर ह्यूमरल रिदम है ना, उसको थोड़ा सा अलाइंड रखता है, और ये जो स्कैपुला है, ये पीछे वाली हड्डी, उसको बाहर पॉप आउट होने से बचाता है, विंगिंग होने से बचाता है. सो एनी शोल्डर प्रॉब्लम, एनी, से यू हैड अ फ्रैक्चर, आपकी सर्जरी हो चुकी है, डिसलोकेशन हुआ था, पेन है, इम्पिंचमेंट है, बर्साइटिस है, whatever it is, you start with strengthening this muscle and then you go on to the other group of muscle. Next. And as I said, the muscle is weak, winging of scapula. As you can see in the image, this is called winging of scapula, and this is where I know कि आपका serratus anterior muscle weak है. If you are someone who says कि मेरी हड्डी ऐसी निकलती है और ऐसा ही है बचपन से, this is a problem. You need to correct it. If you correct it, your shoulder gets better, your posture gets better, your alignment gets better, you can breathe better, you can move better, you'll feel more energetic. So please work on this muscle. This is how you can predict कि वो muscle weak है कि नहीं है. Next. And the other muscles. अब मैंने आपको rotator cuff बताया, आपको serratus बताया. Now you have आगे से pectorals, you have your deltoids, you have your biceps, you have your brachioradialis, you have your triceps. So बहुत सारे मसल्स है. ये विंग मसल जो है ये भी आके शोल्डर पे अटैच होता है, तो इसका भी एक रोल है, latissimus dorsi. आपका ट्रैप्स भी आता है शोल्डर पे अटैच होने को. सो मल्टीपल चीजें हैं. एंड व्हेन आई से मल्टीपल चीजें, देयर कम्स अ डिफरेंस व्हेन अरे यार मेरा शोल्डर दुख रहा है. सो शोल्डर दुख रहा है, रेमेडी सेम नहीं हो सकता है. Every joint I've been talking the same thing. No, I have pain in my shoulder. Okay. Why you have pain is important. Next slide. What is the symptom is important. What is the location is important. For example, if someone comes and says कि doc, मैं जब खेल रहा था एक बार गिर गया एंड मेरा शोल्डर डिसलोकेट हुआ था, मेरे को शोल्डर पेन है. Now he has a history of dislocation.
कि मेरा शोल्डर जॉइंट से निकल गया. This is one person. And the second person says, I am a 70 years old female. मैं जब किचन में काम करती हूँ, बर्तन निकाल के रैक पे रखती हूँ, मेरे को कंधे में दर्द होता है. दोनों को शोल्डर पेन है, दोनों का हिस्ट्री अलग है. ट्रीटमेंट सेम होना चाहिए? नहीं ना. पेन किलर सेम हो सकते हैं, गर्म पानी का सिकाई या बर्फ का सिकाई सेम हो सकता है. एक्सरसाइजेस डिफरेंट होगा, इसका एक्सरसाइज डिफरेंट होगा, इसका एक्सरसाइज डिफरेंट होगा. So please don't copy paste exercises when it comes to any joint pain. Understand why it is, get a diagnosis, figure out which muscle is involved and train that muscle. It will help you better. Next. And we'll directly jump onto the exercises. Next slide. So as I told you, simple. Active movement. Active movement is basically the movements that we can do in the shoulder joint. So whatever you have with you, a water bottle, a stone, a stick, anything, जो भी आपके हाथ में, कुछ भी नहीं है तो hold your phone or anything. Hold it at the front, keep your hand down, lift it up, take it up and slowly down. So this is called flexion. Now गड़बड़ इसमें क्या है, बहुत लोग बहुत fast करते हैं. So when you do it fast, it's basically a momentum that is being created. And because there's a momentum created, your muscles are not functioning to the extreme optimal level. You hold the weight, keep your hand down and lift it slow up and slowly down. So slowly up and down. Come on, take it up and down. You can do, in fact, you can do both hands also together if you're comfortable. And down, 4. We'll do it again. Take it up and down, 5. So this is called flexion. Second exercise is extension. आप हाथ को पीछे ले जाइए and straight. बट इसमें बहुत लोगों ने नोटिस किया होगा, जैसे हाथ दोनों हाथ पीछे ले जा रहे हैं, हमारी बॉडी आगे आ रही है. That's not correct. Sit straight, sit upright, hold the weight whatever you have, take your hand back. अगर बॉडी झुक रही है, fight it. Stay straight and bring it back. 1. Stay straight, take your hands back. 2. बॉडी एकदम सीधा रखना है, हाथ पीछे and neutral. 3. फिर से दोनों हाथ पीछे, बॉडी straight. 4. दोनों हाथ पीछे, keep your body aligned and straight, head straight and relax. 5. So you have flexion, you have extension. Now we'll do abduction. So hands, you can keep your thumb facing outwards. जैसे ये मेरा अगर आप thumb देख पा रहे हो, it's facing up. And take both your hands up and down. ये हमको स्कूल में पीटी में कराते थे, हमने किया भी है, हमको पता भी है, लेकिन हम प्रैक्टिस नहीं करते. वहाँ प्रॉब्लम है, हमको यही चीज करना है. 3. अच्छा, जब मैं ये मूवमेंट कर रहा हूँ, you know, make sure that you are not shrugging. This is wrong. You know, what is correct is you have your alignment. आपका जो नेक और शोल्डर का एंगल है वो सही है, आपका सिर्फ हाथ ऊपर आ रहा है एंड नीचे जा रहा है. टेक योर हैंड अप एंड टेक इट डाउन. 3. टेक इट अप, टेक इट डाउन. 4. टेक इट अप and down. 5. Take it up and down. 6. If you feel while doing this, आपका body again is tending to bend forward, ये गलत है. Try to keep your sternum up, keep your posture upright, shoulders down, and you're moving your hand up and down. So this is abduction. Next is rotation. So you bend your elbow to roughly 90 degrees. Take your hand out and bring it in. 1. Out. So this is external rotation and this is internal rotation.
So in fact, you can do it with both hands. So in, elbows are stuck to the body, bring it in, take it out, bring it in, 3, take it out, 4, bring it in and out, 5. So this is basic normal active movement. Active movement मतलब आप खुद से कितना कर सकते हो. हमेशा you have to make sure that you are going on a complete range of motion. If I tell you कि हाथ ऊपर उठाना है, आप यहाँ आके रुक मत जाओ. Try to take it to the extreme range. That is when your joint will function to the complete range and you'll be healthy. Next slide. Again, anyone who has any problem in the shoulder joint, maybe you had a fracture, you had a surgery, you have pain, you have impingement, you have swelling, you fell down, you have frozen shoulder, you have AC joint arthritis, you have a strain in your joint, anything, you had a history of dislocation, you can do these isometric exercise. So out of all the exercises, isometric is considered as the most basic A and safest. बेसिक भी है और सेफ भी है, इसलिए हम सब कर सकते हैं. सो व्हाट आई वांट यू टू डू इज फॉरगेट द इमेज. आप खड़े में भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं. आई नो मैक्सिमम ऑफ अस आर सिटिंग राइट नाउ, सो आई वांट यू टू डू इन सिटिंग. बेंड योर एल्बो टू 90 डिग्रीज. दूसरा हाथ है, सपोज मेरा राइट हैंड बेंड है, यू मेक अ फिस्ट, कीप योर अदर हैंड इन फ्रंट ऑफ योर राइट हैंड and you have to push. So I'll just show you in this sideways. So my elbow is bent to 90. I made a fist. I kept my other palm in front of my right hand and I'm pushing. So you're doing this movement. अब आपको याद है सर्वाइकल आइसोमेट्रिक में मैंने कहा 2 साल का बच्चा है, उसको उतना ही प्रेशर देना है. सो हमको यहाँ पे भी वही रूल अप्लाई करना है. आपका जो प्रेशर है बहुत कम होना चाहिए. इट्स लाइक मैंने पुश किया, मेरे को ये मसल फील हुआ, I kept it there for 2 seconds and relax. So we'll do it again. Push 1, 2 and relax. Push 1, 2 and relax. Push 1, 2 and relax. Push it again. 1, 2 and relax. Last time. Push 1, 2 and relax. So this is flexion. नाउ एक्सटेंशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके चेयर पे कुछ है जो पीछे आपको रोक के रखा है, यू कैन पुश अगेंस्ट दैट, पुश इट इन द बैक डायरेक्शन एंड रिलैक्स. पुश 1, 2 एंड रिलैक्स. पुश इट बैक 1, 2 एंड रिलैक्स. 3. पुश इट बैक 1, 2 एंड रिलैक्स. लास्ट टाइम. पुश 1, 2 and relax. So this is called isometric. हमने आगे किया, हमने पीछे किया. Now next, as I mentioned कि we have abduction movement. So you can take, I'm doing it on the right hand first. Keep your right hand in 90 degrees. Left hand से आपके arm को पकड़ के रखो. And you have to do this movement. लेकिन आप अपने हाथ से रोक के रखे. So just keep your hand like this. Keep your other palm on the arm and push. So there is no movement happening actually. It's just I'm tightening the muscle and I'm just tightening the muscle and I'm trying to push against it. So 1, 2 and relax. 1, 2 and relax. I'm doing this movement. I'm stopping that movement. So push 1, 2 and relax. 1, 2 and relax. आपको ताकत लगाने की जरूरत नहीं है. It has to be just a contraction. Feel it and relax. Same चीज we'll do it on the left side. Left arm मेरा 90 degrees पे आ गया. Arm by the side of the body.
Right hand से I'm holding my left arm and I'm pushing it out. Hold it and relax. Push करो बाहर, 1, 2 and relax. Push, 1, 2 and relax. Push, 1, 2 and relax. Last time. Push your hand out, 1, 2 and relax. फिर से मैं कह रहा हूँ, मैं ये मूवमेंट कर रहा हूँ, मैंने अपने हाथ से वो मूवमेंट को रोक दिया है, हल्का सा प्रेशर डाल रहा हूँ, 2 सेकंड का होल्ड स्टे कर रहा हूँ एंड आई एम रिलैक्सिंग. सो दिस इज फ्लेक्शन जो हमने ये किया, दिस इज एक्सटेंशन, दिस इज अबडक्शन, एबीडक्शन. अब हम क्या करेंगे, सेम पोजीशन है, अब मैं अपने बॉडी की तरफ उसको धकेलूंगा. सो मैंने अपने हाथ से, अपने एल्बो से अपने रिब केज की तरफ दबा रहा हूँ. सो 1, 2 एंड रिलैक्स. सो आई एम पुशिंग इट अगेंस्ट माय रिब केज. यहाँ से 1, 2 एंड रिलैक्स. अंदर दबाइए अपने हाथ को, 1, 2 एंड रिलैक्स. आपको पूरा आपका आर्म पेट, आपका ये मसल सब ऐसे टाइट होते हुए फील होगा. पुश, 1, 2 एंड रिलैक्स. लास्ट टाइम. अंदर दबाइए अपने हाथ को रिब केज की तरफ, होल्ड एंड रिलैक्स. सेम थिंग, we'll do it on the other side. So I'm sitting, my elbow is at 90 degrees. I'm touching the side of my, rib cage with my arm. And मैं अपने हाथ से उसको अंदर की तरफ दबा रहा हूँ. So मैं अपने हाथ से अपना ही rib cage दबा रहा हूँ. And relax. Press 1, 2 and relax. Press 1, 2 and relax. एक और बार, 1, 2, रिलैक्स. मैं अपने हाथ से अपना रिब केज दबा रहा हूँ, होल्ड इट एंड रिलैक्स. सो दिस इज फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, abduction एंड adduction, ADD, adduction. अब मैंने आपको एक और चीज कहा था कि हमारा हाथ बाहर भी जाता है, रोटेशन, अंदर का रोटेशन भी होता है. सो व्हाट वी कैन डू इज जस्ट अगेन 90 डिग्रीज ऑफ एल्बो, मेक अ फिस्ट. आप हाथ से अपना फिस्ट को रोक के रखिए एंड आपको अंदर पुश करना है. सो पुश, 1, 2 एंड रिलैक्स. आई जस्ट चेंज द एंगल अगेन. सो ये मेरा हाथ है, मैंने 90 डिग्रीज बेंड करके रखा है, दूसरे हाथ से मैंने उसको रोक के रखा है एंड पुश एंड रिलैक्स. सो आई डू इट. ओके, आई डू वन थिंग, आई कॉल मोहित, उस पर मैं ज्यादा अच्छा दिखा सकता हूँ. सो हाय मोहित, चेयर ला लेंगे. सो मोहित इज बैक गाइज. He is the savior for me in this session. So, yes. So Mohit ka hand is at 90 degrees. I am stopping his hand to go in and I'm just asking him to take it inwards. अंदर ले जाओ, अंदर. हाँ, 1, 2 and relax. So मोहित क्या कर रहा है? मोहित ये करने की कोशिश कर रहा है. And मैं क्या कर रहा हूँ? मैं उसको रोक के रखा हूँ. So, yes. अंदर ले जाओ, 1, 2 and relax. 1, 2 and relax. 1, 2 and relax. 1, 2 and relax. अब यहाँ पे तो सपोर्ट लग गया, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए किया है. अब खुद से कैसे करेंगे? अब वो हाथ से करेंगे मोहित, ये हाथ से उसको रोको. यस, ऐसा नहीं, ऐसा. अब मोहित क्या करेगा? ये हाथ मेरे तरफ लाएगा, तो मेरे तरफ लाइए और ये हाथ से रोक के रखेगा. सो राइट हैंड से धकेल रहा है, लेफ्ट से रोक के रख रहा है. 1, 2 एंड रिलैक्स. फिर से 1, 2 एंड रिलैक्स. राइट हैंड पेट की तरफ ले जाने की कोशिश करना है, लेफ्ट से रोक के रखना है. 1, 2 एंड रिलैक्स. एक और बार, 1, 2 एंड रिलैक्स. सो ये हो गया हमारा इंटरनल रोटेशन. नहीं, बैठी रहना. अब हम करेंगे एक्सटर्नल रोटेशन. एक्सटर्नल रोटेशन मतलब हाथ बाहर के तरफ. अभी हमने क्या किया?
हमारा हाथ को पेट के तरफ ले जाने की कोशिश किया, अंदर के तरफ। अब हम बाहर के तरफ करेंगे। बाहर के साइड में बहुत सिंपल है, सेम पोजिशन, आर्म इज एट 90 डिग्रीज बाय द साइड ऑफ योर बॉडी। अब मेरा हाथ बाहर से रोकेगा, सो मेरे को ये मूवमेंट करना है और दूसरे हाथ से मैं इसको रोक के रखा हूं। सो मोहित करो। यस, सो लेफ्ट हैंड से मोहित कर रहा है, आप राइट हैंड से इसको रोक के रखिए ऊपर से। अब मोहित लेफ्ट हैंड को मेरे तरफ ला रहा है एंड राइट हैंड से रोक के रख रहा है। सो बेसिकली आई एम ट्राइंग टू डू दिस एंड आई एम स्टॉपिंग। सो पुश 1 2 and relax. Try to push it out. Push 1 2 and relax. Push 1 2 relax. मैं हाथ बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा हूं, ले जाइए 1 2 रिलैक्स। फिर से पुश 1 2 रिलैक्स। जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे हो, आप ध्यान दीजिए कि जब आप धकेल रहे हो ये हाथ ऐसे खुल नहीं रहा। सो जब आप पुश कर रहे हो, ये एल्बो आपका ऐसा बाहर नहीं आ रहा है, एल्बो अंदर ही है। सेम चीज वो हाथ से। सो आई विल डू इट विद दिस हैंड। हाँ, पुश 1 2 एंड रिलैक्स। राइट हैंड आपको बाहर के तरफ ले जाने की जरूरत है, सो हम दोनों करेंगे। राइट हैंड बाहर ले जाने की जरूरत है और रोक के रखा है। सो पुश 1 2 एंड रिलैक्स। 1 2 एंड रिलैक्स। 1 2 एंड रिलैक्स। 1 2 एंड रिलैक्स। ये एक्सरसाइज मैंने इतना क्यों रेपिटेशन करवाया और इतना स्लो क्यों करवाया, क्योंकि ये सब हम सब कर सकते हैं। चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो, हम सब कर सकते हैं। आप अगर लगता है कि मैं ज्यादा प्रेशर डाल रहा हूं तो मेरे को पेन हो रहा है, वो एक्चुअली गलत है। आपका प्रेशर ही कम होना चाहिए। आपको यू जस्ट हैव टू फील द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ योर मसल। देयर शुड बी नो मूवमेंट इन द मसल। सो इफ आई एम प्रेसिंग, if I'm suppose pressing and I can move the joint, that's wrong. Press उतना ही करना है where you can't move the joint, but you can feel the muscle. So that is correct. Next. Yes. Next slide. We did, shoulder bracing and cervical. So we'll do it again in your shoulder. So hands by the side of your body. Take your shoulder up towards your ears and down. Up and down. Now you remember मैंने कल भी डायलॉग मारा था, आप लोग काम कर रहे लेकिन अच्छे से नहीं कर रहे। सो यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि मोहित अच्छे से नहीं कर रहा है। सो मोहित कान पूरा ऊपर ले जाओ एंड नीचे। अब देखा कितना डिफरेंस है, मोहित अभी पूरा कर पा रहा है एंड नीचे, तो आप भी पूरा कर सकते हो। टेक इट अप एंड डाउन 3, अप एंड डाउन 4, अप and down 5, up and down 6, up and down 7, up and down 8, up and down 9, up and down 10. So this is one that you can do. Second, circles. So bring your shoulder front, lift it up, take it back and down, bring it front, lift it up, take it back and down 2, आगे ऊपर पीछे and नीचे 3. Come on, we'll do it 10 times. Up, back, down, front, up, back, down 4, front, up, back, down 5, front, up, back, down 6, front, up, back, down 7, front, up, back, down 8, front, up, back, down 9, and front, up, back, and down 10. So these are shoulder bracing exercises. You can do it.
If you have any pain or discomfort, you avoid it for the time being, but later on, yes, you can do it. So all of us have to do your active movements, shoulder isometrics and shoulder bracing. ये 3 तो हमको करना ही है. Next. And now we'll jump on to the exercises. You remember I told you the scapular humeral rhythm, one of the most important thing, जिसमें वो serratus muscle becomes weak and because of this वो scapula winging हो जाता है. बहुत सारे हैं हम में से जिसको लगता है कि यहाँ पीछे की तरफ मुझे पलटेंगे. नहीं, थोड़ा सा ऐसा. यहाँ पीछे की तरफ हमको पेन आता है, डिस्कम्फर्ट आता है. मैं सब कर पाता हूँ, लेकिन ये पॉइंट में ना कुछ तकलीफ है. Whenever I see my child or I see myself in the mirror, I feel ये जो हड्डी है, ये वाली हड्डी, ये ऐसी पूरी बाहर आ गई है, बाहर निकला हुआ है. आपको ऐसा लगता है कि you have a pinch muscle or a pinch tendon in the shoulder, कि whenever I lift my hand, there is some pain. This region is a problematic region. And I can tell you one thing, you have this bone over here, it's a V-shaped bone. So अगर आप center में यहाँ कहीं press करोगे, and if you have pain, and if that pain travels to the shoulder, means you have a problem. आज नहीं तो कल it might convert into pain. So whatever exercises I'm showing you right now, please do it. You'll feel better. Again, someone who has knee arthritis or hip arthritis or a knee replacement surgery or hip replacement surgery, you guys don't do this क्योंकि ये पोजीशन आप नहीं ले पाएंगे. एंड मोहित मैट पे चलेंगे. So we'll get into an all fours position. आप ये देख सकते हैं कि his hand is under the shoulder, his knee is under the hip, his entire body is straight and his head is down. So your head, shoulder and thoracic and lumbar, hip, everything is in a straight line. Now what you have to do is maintain this. सिर्फ ये पार्ट आप ये देख सकते हो, सिर्फ ये पार्ट. इसको ऊपर उठाइए, पुश योर हैंड ऑन द फ्लोर एंड लिफ्ट योर थोरासिक चेस्ट एंड इसको नीचे ले जाइए. 1, ऊपर ले जाइए एंड नीचे. आप देख सकते हो कि यहां ज्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा है, यहां पे ज्यादा मूवमेंट हो रहा है. 3. अच्छा, इसमें गलत कैसे पता चले कि हम गलत कर रहे हैं? मोहित गलत वाला करेंगे. पूरा का पूरा ऊपर उठाओ. जो हम कैट एंड काउ वाला करते हैं, हम इसमें भी उसको मिक्स कर देते हैं. तो ऐसा लगता है कि हम कर रहे हैं लेकिन इंप्रूवमेंट नहीं है. ये एक्सरसाइज इज फॉर अ स्पाइनल मोबिलिटी. इसका और ये जो मैं आप जो अभी स्ट्रक्चर बता रहा हूं, उसका कोई कनेक्शन नहीं है. सो अब करेक्ट वाला. सो एवरीथिंग इज फ्लैट. सिर्फ आपका अपर बैक इज गोइंग अप एंड गोइंग डाउन. Up and going down. So this is scapular push-ups for your serratus muscle. Next slide. Now you remember I told you external rotation and internal rotation. Which side में लेटेंगे? Face उस side. So you can lie down on your side. You can take a water bottle or a 1 kg dumbbell, weight cuff, whatever you have at home. Your down hand is under your head. Top hand is just by the side of your body. You can hold something in your palm. Right now we are not holding anything. Make a fist. You can take your hand down. Now bring it up, up, up. This is external rotation and down. Again, whenever you have a shoulder issue, one of the important exercise. So you can move it out and in. जब भी आप ये कर रहे हो, you are not falling back, you are not falling front. आप ये shrug नहीं कर रहे हो यहाँ से. तो गलत कैसे होता है? आप ये उठा लेते हो,
यहाँ पे गैप आ जाता है. दिस इज हाउ यू नो कि इट इज रॉन्ग. So shoulder down, elbow is by the side of your body and keep moving it up and down. So we'll do it 5 times. 1, good. धीरे से ले जाइए ऊपर, take it up. 2, हो सकता है हम में से किसी को दर्द हो यहाँ पे ये करने से. अगर पेन है तो मे बी ये पोजिशन इज नॉट फॉर यू राइट नाउ. मे बी यू कैन डू समथिंग एल्स. स्टार्ट विथ योर आइसोमेट्रिक. वहां इंप्रूवमेंट आएगा, उसका प्रोग्रेशन यहाँ पे है. 4 and one more time. 5. Same thing, we'll do it on the other side. Yes. Hand by the side of your body. ऊपर ले जाना है and नीचे. 1. As you can see, his entire body is stable. He's not moving. He's quite comfortable and he's just moving his hand out and in. 3. Again. 4. You'll feel it over here. You'll feel it over here. So this is the area जहाँ पे आपको महसूस होगा. 5. वहां टर्न हो जाते हैं वापस. सो ये था एक्सटर्नल रोटेशन. नाउ विल डू इंटरनल रोटेशन. यू कैन कीप अ कुशन अंडर द हेड. राइट नाउ वी डू नॉट हैव अ कुशन, तो हम हेड को ऐसी हवा में रखेंगे. जो नीचे का हाथ है वो बॉडी के बाजू में रहेगा. एल्बो 90 डिग्रीज पे रहेगा. एंड यस, यहाँ पे एल्बो 90 डिग्रीज एंड लिफ्ट योर हैंड अप एंड देन. सो आपका हाथ बॉडी के नीचे नहीं है, आपका हाथ थोड़ा सा आगे है. आगे है इसलिए आप वो अप एंड डाउन मूव कर पा रहे. सो दिस इज इंटरनल रोटेशन. यू मूव इट अप एंड डाउन, move it up. But someone who had a fracture, just underwent a surgery, has problem lying down on the same side, someone who has frozen shoulder, आप ये position avoid करो. But someone who says, oh, I'm fine, but I just need to strengthen my shoulder, this is what you can do. Just make sure you have a cushion under the head. Next slide. Relax. And we'll go back in sitting. So when I talk about, so these were the few exercises that everybody can do, except the one that I showed you in lying down, जहाँ पे pressure आ सकता है. So they were strengthening exercises and movement based exercise. Now we'll go back to stretching. So when I talk about stretching, simple है. पहला stretch, just take your arm, hold the elbow, pull it on the opposite side. You'll feel a stretch on the shoulder. Hold it. 3, 2, 1 and relax. We'll do it again. So 1, 2, 3, 4, 5. Same thing we'll do on the other side. So right shoulder, hold the right elbow, pull it towards the left side, hold it. 3, 2, 1, relax. Right shoulder, elbow को पकड़ो, खींचो elbow दूसरे तरफ. आपको स्ट्रेच फील होगा शोल्डर पे. होल्ड इट फॉर 5 सेकेंड्स एंड रिलैक्स. सो ये पहला स्ट्रेच हो गया. सेकेंड स्ट्रेच है, हाथ आपका ऊपर रहेगा, दूसरा हाथ से एल्बो पकड़ना है एंड पीछे खींचना है और सर के तरफ अंदर खींचना है. सो यू आर पुलिंग इट बैक एंड यू पुलिंग इट इन. सो पीछे खींचा और अंदर खींचा. होल्ड इट. 5, 4, 3, 2 and relax. Hand up, hold your elbow, pull it back and in. 5, 4, 3, 2, relax. Same चीज हम राइट साइड करेंगे. तो हाथ ऊपर, hold your elbow, pull it back and in. 5, 4, 3, 2 and relax. एक लास्ट टाइम. हाथ ऊपर, hold your elbow, pull it back and in. 5, 4, 3, 2, 1. जब भी आप स्ट्रेच कर रहे हो, ध्यान दीजिए कि आप सीधा बैठे हो. अगर लग रहा है स्ट्रेच करने के टाइम आप पूरा झुक गए तो वो गलत है. कीप योर बॉडी अलाइंड. नेक्स्ट स्लाइड. ये 2 हो गया
जैसे हमने नेक का स्ट्रेच किया था, we'll do it again today. Your neck muscles, few muscles come onto the shoulder. They are very important when you're treating any shoulder issue. So we'll stretch the right side of my neck. So left hand, hold it on the right side of the head, pull it towards the left. You'll feel a stretch on the right trapezius muscle. Hold it and relax. Keep your hand, pull it towards the opposite side, hold for 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, and relax. Same thing on the left side. So right hand, left head, pull it towards the right. Feel the stretch on the left traps. 3, 2, 1, relax. एक बार और करेंगे. राइट हैंड, लेफ्ट हेड, राइट साइड खींचो. लेफ्ट ट्रापेजियस मसल पे आपको फील होगा. 5, 4, 3, 2, 1 एंड रिलैक्स. सो ये था आपका ट्रैप्स के लिए. अब विल टॉक अबाउट लिवेटर स्कैपुला. सो एक और स्ट्रेच है बेसिकली. राइट अपना सर को राइट घुटने की तरफ देखिए. राइट हैंड से सर पकड़ लीजिए एंड अपने सर को राइट घुटने की तरफ खींचना है. तो आपको यहां स्ट्रेच होगा. 3, 2, 1. Again, turn your head towards the right knee. With your right hand, hold your head and pull it towards the right knee. Hold it for 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, and relax. Same thing, we'll do it on the left. So look at the left knee, left hand, hold the head, pull it towards the left knee. You'll feel a stretch on the right levator scapulae muscle. 3, 2, 1, relax. एक लास्ट टाइम करेंगे. लेफ्ट हैंड, हेड पकड़े, राइट लेफ्ट साइड तरफ मैंने देखा, सर को लेफ्ट नी की तरफ खींचा, होल्ड इट फॉर 5 seconds. 3, 2, 1 and relax. Next slide. Then we have your pectoral muscle और ये कैप्सूल. तो याद है हम जब साइड में लेटे थे, कुछ नहीं करना है. साइड में लेट के आपको सिर्फ हाथ नीचे ले जाना है. या फिर वी कैन ऑल डू दिस. हाथ ऐसे साइड में रखिए, एल्बो 90 डिग्रीज बेंट रखा मैंने, दूसरे हाथ से आई एम जस्ट टेकिंग इट डाउन. तो जब आप हाथ नीचे ले जा रहे हो, आपको यहाँ कुछ फील हो रहा है. सो दैट्स अ कैप्सुलर स्ट्रेच. या तो यहाँ फील होगा, यहाँ पीछे के साइड फील होगा. सो दिस इज ऑल्सो व्हाट यू कैन डू. नेक्स्ट स्लाइड. And I'll talk about few common shoulder problems that are very common, which is I'll start with frozen shoulder. It's an idiopathic condition. इसका कोई specific reason नहीं है कि आपने ऐसा किया इसलिए ये हुआ या आपको ये लग गया इसलिए frozen shoulder हुआ. Frozen shoulder में आपका movement नहीं होगा. You will not be able to lift your hand up. Even if you hold your hand and you try to take it up, it will get restricted. वो ऊपर जाएगा ही नहीं. That is how we know कि ये freeze हो चुका है, आपका movement restricted है, and we term it as adhesive capsulitis or frozen shoulder. As the name suggests, frozen, अटक गया है. अब हमको क्या करना है, इसको धीरे धीरे stretch करना है. So one, you just hold your hand, दूसरे हाथ से try to push it up. So the movements that are not possible, you try to push through that movement. Pain होगा, discomfort होगा, I agree. But gradually you'll notice कि अच्छा, मेरा एक पिछले हफ्ते ना मेरा हाथ इतना ही उठ रहा था, but if I'm doing it regularly, my hand has started to improve. Pain है, discomfort है, movements are getting better. So all movements, आपका ये हो गया, आगे हो गया, सर के पीछे हो गया, या फिर बैक के पीछे हो गया. So you can use a stick, keep it like this, pull it inwards, use a stick or a towel, pull it inside. So you can use multiple things just to create that movement. So for frozen shoulder, basic घर पे बैठ के आप ये एक simple, active assisted exercise, you can do it. Next. Very common problem कि doc,
जब मैं हाथ उठाता हूँ, I have pain. Whenever I'm lifting, I'm doing something, I have a pinch sensation and it's very painful. That can be an impingement syndrome. Impingement means, you remember the scapulohumeral rhythm? वहां गड़बड़ है, मसल्स वीक है, गलत डायरेक्शन में सो गया, जॉइंट का कैप्सूल आपका टाइट हो गया. सो मल्टीपल रीजन, you are moving your hand, you have pain, but you can move it. In such a situation, start with your isometrics, do some massage on your shoulder joint, do some massage over the scapular region. You can, जो हमने अभी किया, lie down on your side and external rotation, you can do that. So start training your muscle. Gradually this impingement should get down. If you feel कि you've been doing it but it's not recovered, go to a doctor, go to a good physiotherapist. He will treat you for the impingement and आपका problem within weeks ठीक हो जाना चाहिए. Next slide. Dislocation. You know, dislocation is simple जब आपका joint socket से बाहर आ जाता है. या फिर I get many calls who says कि my shoulder is not stable. I feel it's, there's a lot of instability. Whenever I try to do something, it pops out. There are many who will say कि अच्छा it pops out and I pop it back in. It is good. You are able to do it. But it is very dangerous. क्योंकि जितनी बार वो हिलेगा उतना वो फ्रिक्शन क्रिएट करेगा, उतना वो जॉइंट का कार्टिलेज, जो बोन का हेल्थ, आपके जो भी स्ट्रक्चर्स है, सबको डैमेज करना चालू कर देगा. सो इफ देयर इज अ डिसलोकेशन, मेनली और डिसलोकेशन कम्स फ्रॉम शोल्डर आगे निकल गया या नीचे उतर गया. दैट इज द मेन कॉज, मेन कंप्लेन. कोई कोई केस में शोल्डर पीछे की तरफ जाता है. If there is a dislocation history or an instability history, please again show it to a doctor. Get your exercise set in. Understand कि अगर आपका 3-4 बार के ऊपर dislocation हुआ है, it's better to get a surgery. If you feel there is no pain, it dislocates, but I'm popping it back in, but I'm absolutely, pain free, मेरा movement सब अच्छा है, you are still on the right track. Strengthen all the exercises that I gave you. आपका एक्टिव मूवमेंट्स हो गया, आइसोमेट्रिक्स हो गया, these are the safe one. Apart from this, wherever the dislocation is, shoulder नीचे उतरा, exercises changes, shoulder आगे निकला, exercises changes. So based on what is happening, you can customize the exercise plan then. Next, very common problem, tennis elbow या lateral epicondylitis. If your shoulder is weak or you are using a lot of writing, typing, lot of wrist and forearm movement, ये सारे muscles ये एक bone से start होते हैं. And because of constant pull pressure, there's inflammation and it's called as layman term में tennis elbow. So what can we do for this? A, you can keep your hand front, hold your wrist and give it a stretch. You'll feel a stretch on the extensor group of muscle. I'll just do this and show you. हाथ ऐसे रखिए लेकिन आप सामने रखिए and stretch. So you keep your hand front, wrist down and stretch. Give it a comfortable stretch. आपको stretch feel होना चाहिए, pain नहीं. Hold it for 5 to 30 seconds. Do it 2 to 3 times. This is one. Second, keep your hand in 90 degrees. आपका रिस्ट को ऊपर ले जाइए एंड बहुत धीरे नीचे लाइए, एंड टू एंड. फिर दूसरे हाथ से रिस्ट को ऊपर ले जाइए और बहुत धीरे आप उसको नीचे लाइए. अगर ये आसान है, यू कैन होल्ड एनी वेट. आधा लीटर पानी का बॉटल, 1 लीटर पानी का बॉटल, इफ यू हैव अ डम्बेल, इफ यू हैव अ केटल बेल, whatever. Hold the weight which is comfortable for you. Lift your hand up, your wrist, maintain, and very slow you are going down. I'll just do it once again. So my hand is roughly at 90 degrees. I took my wrist up and very slow I am going down. Take your wrist up, very slow, going down.
So this is the exercise for tennis elbow. Apart from this, you can massage your extensor muscle. So आप ये उसको massage करिए. You can apply ice, you can apply hot pack, and you can use a tennis elbow belt जो बहुत commonly आपको कोई भी medical shop में मिल जाएगा. So this is for tennis elbow. Next, tennis elbow यहाँ होता है बाहर की तरफ, तो golfer's elbow अंदर की तरफ होता है. Again, टेनिस एल्बो मेरे को बाहर की तरफ होगा, लेकिन कोई बोलता है मेरे को अंदर की तरफ है, तो इट कैन बी प्रोबेबली गोल्फर्स एल्बो. सो यू रिमेंबर टेनिस एल्बो मैंने ऊपर ले गया था और नीचे, इसमें उल्टा हो जाएगा. इसमें मैं हाथ ऐसा रखूंगा, पाम फेसिंग द सीलिंग. मैंने वेट उठाया, दूसरे हाथ से उसको फ्लेक्स किया एंड बहुत स्लो नीचे गया. एक बार आई हैव रीच्ड द एंड, आई विल अगेन ब्रिंग माय रिस्ट अप, maintain, very slow, take it down. So this is for your golfer's elbow, yeah, medial elbow pain. And yaha tennis elbow mein we stretch like this. Medial elbow pain mein we'll stretch it like this. So you can see tennis elbow मेरा घड़ी ऊपर देख रहा है and golfer's elbow मेरी घड़ी नीचे देख रही है. So that is how you can remember कि किस में क्या stretch करना है. Next. So this. Apart from this, I had talked about, trigger finger yesterday. I'll just show you the exercise again. So this is my finger. मैंने जो अब 3 joint है, 1, 2 and 3, जो मेरा finger bend करता है. So what will I do is, पहला joint को मैंने bend किया, second joint bend किया and third joint bend किया and reverse. Third joint straight, second joint straight and straighten the first joint. We'll do it again. Bend it, bend it, bend it, and straight, straight, straight. So it's like a coiling and uncoiling. So that is how you have to do it for your trigger finger. Simple for your wrist and forearm. Hold any weight. I'll show you again inside. You can do your up and down movement. You can do circles. You can do figure of 8 movement. So whatever movements can you do with your wrist, you can try doing it with half kg or 1 kg weight. चाहे वो पानी का bottle हो या dumbbell हो, it will help you. So these are few things that you can do for your shoulder, elbow and wrist. Keep it customized. Simple exercises तो आप सब कर सकते हैं, लेकिन आपका जो core complaint है, like कोई अगर बोलता है कि केविन shoulder dislocate हो गया था, तो वहां आपके एक्सरसाइजेस थोड़े से चेंज हो जाएंगे. अगर आप बोलते हो मेरे को फ्रैक्चर हुआ था, आपके एक्सरसाइजेस चेंज हो जाएंगे. आप बोलते हो फ्रोजन शोल्डर है, आपके एक्सरसाइजेस चेंज हो जाएंगे. सो डोंट रिपीट द एंटायर थिंग. सिंपल जो स्टार्ट मैंने किया था, एवरीवन कैन डू इट एंड देन यू कस्टमाइज इट. यस, थैंक यू. थैंक यू सो मच सर. सर आई होप आज के क्वेश्चन से हम लोग ऑलमोस्ट सारे जॉइंट्स ही कवर कर चुके हैं, द मेजर वंस एंड everything around it. We will pick some questions from the chat. While doing any joint exercises, I burp. Why does this happen, especially in the upper body joints? Can you repeat it? While doing any joint exercise, I Burp. Acha, burp. See, it may be something related to your, gastric issue or your intestine or your gut balance. That is one. Maybe you are taking in too much of air with your mouth while exercising. तभी भी burp आ सकता है. Maybe आपका posture खराब है, तो gases form हो रहे, तो भी आपका हो सकता है. But it's okay. If you're burping, it's okay. Just go show it to a doctor who can check your gut balance, who's checking कि आपको gases तो नहीं हो रहा है या फिर कुछ acid reflux तो नहीं हो रहा है. If that is fine, then burping is fine. It's a normal thing. थैंक यू सर. हिप से नीचे का एक्सरसाइज जहां तक करने से हिप और थाइज में बहुत दर्द होता है. कल का सेशन में इसका रेमेडी डिस्कस करें. हीट पैड लगाने से बेटर होता है. स्टेयर्स चढ़ने से ज्यादा हो रहा है. ज्यादा चलने से भी ज्यादा हो रहा है. रेस्ट करने से बेटर होता है. बैठ के उठ के चलने में
घोड़ा चलने के बाद दर्द कम होता है और स्टेयर्स में चढ़ने पे ज़्यादा पेन होता है। So, see, according to the complaint, I am again assuming he was someone who is above 65, 70. So, हो सकता है कि there is arthritis, हो सकता है your bodies become very weak, हो सकता है that there is some underlying pathology जो हमको नहीं पता. What you do is आपको ये पता है कि जब मैं रेस्ट करती हूँ या करता हूँ मुझे ठीक लगता है. So you can start with lower leg isometric exercise. आप ये या तो आप गूगल पे डाल दीजिए या फिर यू कॉन्टैक्ट अ फिजियोथेरेपिस्ट, फिगर आउट कि मैं ग्लूट्स के लिए, क्वाड्रिसेप्स के लिए, हैमस्ट्रिंग के लिए क्या एक्सरसाइज कर सकता हूँ. दैट इज वन. मैंने कल बताया था, डे 1 पे बताया, डे 2 पे कि घुटना नीचे दबाइए, the knee up and down. So that's for your thigh muscle. You can sit on a chair. हल्का सा ऊपर उठ के बैठ जाइए वापस. पूरा खड़े होने की जरूरत नहीं है. हल्का सा उठिए और बैठ जाइए. So you are training your quads and glutes. So ये strength training एकदम low intensity start करिए. Gradually you'll build up your strength, and one fine day you should be able to do activities. Best exercise for you is cycling. आप घर पे एक साइकिल ला लीजिए, सिट एंड साइकिल. दैट विल लिटरली हेल्प यू, आपका जो हिप और नी पेन है उसको कम करने के लिए. शो इट टू अ डॉक्टर, फिगर आउट योर विटामिन डी, कैल्शियम डेफिशिएंसी, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया रूल आउट कर लीजिए, एंड जस्ट द एक्सरसाइज यू शुड बी गुड. Thank you, sir. I have two questions to be asked. One, when I sit in Sukhasan for a long time and then get up, my whole back to shoulder gets locked and becomes stiff with pain. It takes few minutes to get relaxed. It happens every time I sit. Number two, when I sit in Sukhasan, front of my upper thigh around groin region pains a lot. It mostly stays for long. सो अगेन व्हेन यू सिट इन सुखासन, मोस्ट प्रोबेबली आपका जो हिप जॉइंट है, लंबो पेल्विक रीजन है, दैट एसआई जॉइंट, ये आपका जॉइंट आपका स्टिफ है. एंड दैट इज व्हाई व्हेन यू आर सिटिंग फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन वो सब टाइट हो जा रहा है. एंड एज सुन एज यू गेट आउट ऑफ दैट पोजिशन इट पेन्स. एंड बट अब जब मूवमेंट करते हो, थोड़ा सा झुकते हो, स्ट्रेच करते हो, वो धीरे धीरे सबसाइड हो जाता है. सो दिस इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल वेयर योर हिप जॉइंट इज स्टिफ. Just do some hip mobility exercise and some hot pack in your hip and pelvic region. You should be fine. Again, if you're sitting say for half an hour और उसके बाद आपका ये प्रॉब्लम होता है, इनिशियली मे बी आप 20-25 मिनट में आप उठ जाओ. पेन आने के पहले आप वो पोजिशन से हट जाओ. दिस इज वन. स्टार्ट वर्किंग ऑन मोबिलिटी ग्रेजुअली. 25 का 30 मिनट्स करो, 30 का 35 मिनट्स करो, एंड यू शुड बी एबल टू डू इट. यस. All right, sir. So the next question is again on sitting cross legs. Um, any exercises or techniques I should use to sit cross-legged on floor for periods longer than 30 minutes without pain or cramps? Again, ankle mobility, hip mobility, and spine mobility. Do lot of mobility exercises, stretch all your lower half muscle, and gradually start sitting for extra. ये है ना, हम लोग जैसे हमारे टर्म में एज अ स्पोर्ट्स पर्सन आई से स्पोर्ट्स स्पेसिफिक या गोल स्पेसिफिक आपको करना है. सो इफ आई वांट टू सिट फॉर मोर देन 30 मिनट्स, आई हैव टू ट्रेन माय बॉडी टू सिट फॉर मोर देन 30 मिनट्स. मतलब 30 मिनट्स हो गए, आप 2-3 मिनट ज्यादा खींचो. 33-34 मिनट्स तक यू सेट, फिर आप उठो. एक हफ्ते बाद 35-36 मिनट्स तक सेट, फिर आप उठो. तो ग्रेजुअली इंक्रीज द टाइम and do these mobility exercises. You should be able to sit. It's not a big problem. Yes. So the next question is on blood test. To know calcium level of the bone, which test is needed? Is blood calcium test not useful? So, no, it is useful. You can do a calcium test, you can do vitamin D3. For bone health, you can do a DEXA scan. So, you just do these things and you should be, it's good, it's pretty good. ये 3 टेस्ट में आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे.
Okay, sir. After walking for half an hour, I get swelling and pain in the back of knee and Mhm. burning sensation in the right side of knee. Is it nerve muscles or bone problem? What to do and which doctor do I need to see? Orthopedic or any other doctor? And when to use hot pack and or cold pack? Okay. So as per your complaint, I feel it might be a bursitis or a cyst that is behind your knee. That is when जब आप चल रहे हो, when you're moving around, वो inflame हो जा रहा है, painful हो रहा है, burning हो रहा है, and that is probably giving you pain on the outer part of the knee. You need to show it to an orthopedic surgeon, जो हड्डी वाला डॉक्टर होता है, that. And exercise, just one, maybe the knee press exercise. You just do that one thing. Let the doctor figure out कि सही में यही है क्या bursitis, and if यही है, he'll give you an anti-inflammatory drug, and वो swelling आपका उतर जाएगा, जिसके कारण pain निकल जाएगा, and you should be back in action. Okay, sir. So the next question is about elbow pain. So Hmm. that we have already discussed in the session. I want Yes. to also know about specific exercises for lower back pain and pinched nerve. Again. So low It, back pain तो मैंने आपको sir, बताया है. हाँ. yes, सर जो कवर हो गया वो हम रहने दे सकते हैं, वो हम क्लिप्स टीम से एडिट करवा देंगे. ठीक है. Yes. हाँ. जस्ट द पिंच नर्व. अब पिंच नर्व में आई जस्ट एक दो सेकंड में, पेन आपका पीछे से जा रहा है, साइड से जा रहा है, आगे से है कि अंदर से है, चारों इसमें आपके एक्सरसाइजेस चेंज हो जाएंगे. सो फर्स्ट यू हैव टू एक्सप्लेन योर कंडीशन प्रॉपर्ली कि पिंच नर्व है, हैमस्ट्रिंग ग्लूट्स काफ में है, या फिर एंटीरियर पार्ट में आ रहा है. You have to, if you have that pinch nerve, it's troubling you a lot, get an MRI done, show it to a spine specialist, get the diagnosis, and then only do the exercise. If you do a wrong exercise, the problem will increase. Yes. So the next question is on flat foot. I have Mhm. flat foot and I'm looking for shoes for walking. Can you ask Dr. Kevin which types of shoes should I buy? My foot aches a lot when I walk. There was no one to help me, but when I attended the session, I thought he might help me. I have knee issues too. I was doing knee exercises as and to some extent it was helpful. But when sir told that if you have problem in foot, your knees also pain. So, Yes. sir, I think what can we? Yeah. So if you have flat foot, you get a footwear that has a arch support. सो योर दो चीज आपके फुटवेयर में होना चाहिए. एक तो उसका जो कुशन है, इट शुड बी क्वाइट गुड, सॉफ्ट होना चाहिए. दैट इज वन. सेकेंड, जो आपका फुट फ्लैट है, इट शुड हैव अ आर्च सपोर्ट. इफ यू फील ओके माय फुटवेयर इज सॉफ्ट बट डज नॉट हैव अ आर्च सपोर्ट, probably whichever city wherever you are staying, figure out, आप वहाँ पे डाल दो customized insole, whoever is making a foot insole customization, contact them according to your foot, get that made, put it in your footwear, and things should be better. So soft and arch support, two factors you have to focus on. Yes, हो सकता है flat foot के कारण knee pain हो रहा हो. Correct that, do all the flat foot exercises, do all the knee exercises, and you should be okay. All right, sir. I have a T12 compression crack. I am on bed rest now, but the doctor has permitted me to travel on 27th. The travel will be by flight and road. I wanted to know what precautions I should take while sitting for those long hours. So, okay, now how many days or weeks or months have that fracture been there? So that is very important. So if you say कि अभी अभी हुआ है, I will suggest get a full body spinal brace जो आपके हर spine के bone को support रखेगा. It's like a strap, like a bag. आप वो brace पहन लो, strap कर लो, and you can move around. Precautions: don't bend forward, don't lift your luggage, don't twist. If you know ki the road is bumpy, ask the driver to drive slow. Sit with a cushion under your buttocks. So these are the simple precautions. One more thing you can do कि flight तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते.
बट जो रोड जर्नी है, मे बी आप हर आधे घंटे में उसको बोलो 5 मिनट रोक दे, you get down, just walk for 2-3 minutes and sit back. So this can be done and you can travel. But if you have that fracture just recently, 2 हफ्ता ही हुआ है या 15 दिन ही हुआ है, please avoid traveling, it will trouble you. I have been experiencing pain in left hip joint only while sleeping, especially when I sleep on the right. The pain subsides when I sleep straight on my back. Unable to say if it is radiating, the pain does not persist through the morning while I get through my chores. I have no health issues except for cholesterol. I am 71 years young. Thank you so much. Okay. So see again your condition as per your complaint, there might be some inflammatory problem like a bursitis or cyst or a tight structure जो वो particular angle पे आपको तकलीफ दे रहा है. Just get massages done, use a ice pack or hot pack, whichever you feel better. Do some stretches of your hip and pelvic muscles and you should be fine. I am confirmed कि बड़ा problem नहीं है. Why? Because as you sleep straight, as you move around, there is no pain. I mean, there's no big problem. There's some small issue, get some deep massages, you should be fine. Thank you, sir. Want to ask question about my feet which has gatti. You explained about it, but not you did not mention treatment. Please share some remedies. Okay. So again, मैंने जो कल इसलिए मैंने I did not answer this question. I answered it but half. It's probably गद्दी आपका नस दबने के कारण हो रहा है, डायबिटीज के कारण हो रहा है कि कोई और प्रॉब्लम है. So based on that problem, your treatment changes. A, if you have back issue or you know कि मेरे को slip disc, spondylitis, L4, L5, S1 कुछ तो भी तकलीफ है, show it to the doctor. You need medications first. B, if you are diabetic and you know कि diabetic neuropathy हुआ है, आपको ये term दिया है डॉक्टर ने, it's because of the diabetes, exercise won't help you. हाँ, आप जो चीज कर सकते हो, that is your toe curling, जो आप बैठ के कर सकते हो. You can move your foot up and down, move it circles, so that you are trying to increase the blood circulation. But this is secondary. Primary, you figure out why is that gaddi feeling there, and then you start treating it. So that is why I did not give a particular set of exercise. Diagnosis is important, and based on that diagnosis, your treatment. कुछ भी अपने को रैंडम नहीं करके देखना है. All right, sir. Can I use an infra lamp in case of joint or muscle pain in leg? Yes, you can use it. Just be careful कि you are not close to the lamp, नहीं तो burn हो जाएगा. And it's a dry heat, so don't make it a habit कि हर बार मेरे को तकलीफ हो रही है मैं infrared lamp ले रहा हूँ. So keep it SOS when required. Then, unless you really require it, don't take it. So there are many questions, but this is the last question we'll take. Please advise what to do for L5 to S1 compression. Also, are bunion socks effective for treating bunions? Again, L5S1, where is the compression? Which nerve? And where is the nerve supplying? Behind the thigh, out of the thigh, front. Your pain is radiating to the buttocks, it's radiating towards the abdomen, groin region, it's going down till the toes. So, based on what is your entire complaint, your exercises will change. So, this part I will skip. Bunion toe socks, yes, you can wear it. Bunion toe splint, yes, you can wear it. Your footwear has to be wide. You're not supposed to wear narrow footwear. If you are flat foot, you get an arch support done. If you have pain, you remember I told you, hold your foot, hold your toe and move it in all directions. Keep doing this. I have shown some bunion toe exercises. Keep following that. So all of these things will help you out with your bunion toe. Yes. Amazing. Thank you so much, Dr. Kevin.
Thank for taking out time and doing these sessions for us and customizing this session for our community and our users. How did we like the session? We will share a feedback form with you. Please fill it. And if you want Sir to take any more sessions, or if there are any topics that you want Sir to cover, you can mention it in the feedback form. And whenever we plan to do the session next, we can include those topics also in our sessions. Um, Thank you once again, sir, for curating this you. workshop and for answering all the questions. We bombarded sir with questions before, after, and he was very kind and very patient to answer all of that very calmly. So thank you so much, and we hope to see you very, very soon. Thank you. Thank you, guys. All right, that's it for the joint pain relief workshop. I really hope that you enjoyed the session, you learned something new, both theoretical and practical, है ना? आप कुछ ऐसा सीखे जो आपको थ्योरी में भी काम आए अपने बॉडी के बारे में जान के, और आपने कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस भी सीखे जो आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में प्रैक्टिस कर सके. सर ने तो हमें सारी चीजें सिखा दी है, बट जब तक हम उसको हैबिट बनाकर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक एक बारी करने से कुछ नहीं होगा. It is very very important that we keep practicing, we make a habit. 5 मिनट ही निकाल कर करना, बट जरूर से करना. We will see you next week with our gut detox program, जिसकी PDF आपके साथ शेयर हो चुकी है. So keep buying the ingredients, अपने ingredients ready रखना, and I will see you next week for the 5-day gut detox program. Thank you so much for joining this workshop, and we'll see you very soon. Namaste.